Hi everybody, welcome to the YouTube channel of PRATHAM Test Prep. Myself, Juhi Sharma, and here we are with yet another session for class 11th economics. So we conduct sessions every Wednesday at 9 p.m. for class 11th, right? Every Wednesday at 9 p.m. for class 11th. Right, and if you have any friends who are in class 12th, so you can refer them. And we conduct, good evening, Sarthak. We conduct sessions for class 12th on every Saturday at 10:30 a.m. Right? Every Saturday at 10:30 a.m. we conduct sessions for classes 12. Now, in these particular sessions, what our main focus is? Our main focus is that we basically we want your concepts to get revised, we want your concepts to get cleared. Hello Mayank, right? We want that ki aapke concepts clear ho, aapke concepts revise ho. And economics is one such subject which is like common for the science student too, which is like for between science, commerce, humanities. Economics is a subject which can be there in all the combinations for science and commerce and humanities, right? So that's the reason why we have focused specifically on economics. In the last session, we covered everything about utility. So if you have not watched that particular session, I would request you to go onto the Pratham Test Prep's YouTube channel. There is this playlist called CBSE Economics Special, and there you can clear all the concepts regarding the utility, that what is utility, cardinal, ordinal utility. You can clear all the concepts over there. So today we are specifically focusing upon indifference curve. Now, before moving into the topic, I want you to give this video a thumbs up. Do like this video because it actually motivates us to come up with many more videos, many more recorded lectures, live sessions for you guys, right? So give this video a thumbs up. Subscribe to Pratham Test Prep's channel if you haven't subscribed already, because trust me, we come up with a lot of informative videos and lives for all of you, from form filling to vocab sessions to economic sessions, current affairs, and whatnot, right? So let's quickly start. And in this particular session, I'll be starting, I'll be teaching you, I'll be telling you the concept, I'll be giving you the concept clarity of indifference curve. Now, what all will be studying, I'm just giving you a quick table of content, let's say. In indifference curve, majorly, see, my target is if you get any question, any subjective question in your exams, how you can answer to that subjective question by sticking to the point, by sticking to the word limit, because we don't want to beat around the bushes, right? So in indifference curve, the first thing which we will study about indifference map, right? We'll be studying about indifference map, because indifference curve isn't complete without the map or table, right? Second thing, I'll be telling you about indifference curve or IC. And thirdly, we will be discussing about the properties of indifference curve, right? The properties of indifference curve. Okay. Now, quickly move on to the first slide, wherein I'll tell you what is indifference curve and what actually is indifference map, right? So, indifference curve is nothing. It is just, or before I have to tell you about indifference map, it is just a simple thing. It's like a tabular format. It's like a map जो आपको बताता है कि क्या 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 आपके कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं, किस टाइप का आपका कर्व बनेगा ऑन एन इंडिफरेंस कर्व, राइट? क्या क्या आपके पॉसिबल कॉम्बिनेशंस होंगे, बिकॉज जब तक यू डोंट हैव अ टेबुलर फॉर्मेट, तब तक के लिए यू कांट ड्रॉ अ मैप, राइट? सो टेल मी गाइस, अगर हम डिमांड कर्व ड्रॉ कर रहे हैं, तो उससे पहले डू वी नीड टू मेक अ डिमांड शेड्यूल? आंसर मीन अ यस और अ नो. डू वी हैव टू नो अबाउट डिमांड शेड्यूल कि भाई कितनी क्वांटिटी डिमांडेड है, क्या प्राइस है, उसके बाद ही तो हम डिमांड कर्व बना सकते हैं, डिमांड कर्व डिराइव कर सकते हैं. So similarly, for making indifference curve, we need to have an indifference map, or that table which actually gives the understanding of consumers' choices, right? Consumer की क्या choices हैं, क्या क्या उसको maximum level of satisfaction जो है वो मिलेगा, right? So
indifference map तो हमें समझ आ गया that it refers to the set of indifference curve basically that reflects and it gives us the understanding कि क्या क्या consumer की choices है. Now indifference curve क्या है? Indifference curve वो एक ऐसा curve है, it somewhat looks like this. ये एक ऐसा कर्व है जो आपको वो सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशंस देता है, वो सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशंस के बारे में बताता है which gives consumer the maximum level of satisfaction, right? फिर चाहे वो ये पॉइंट ए हो, ये पॉइंट बी हो, ये पॉइंट सी हो, राइट? All these combinations give the consumer maximum level of satisfaction, and in that case we say that it is an indifference curve. Because see, कंज्यूमर को कोई भी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, फॉर एग्जांपल यहां से कंज्यूमर को लेट से 8 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट y मिल रहा है और लेट से 1 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट x मिल रहा है, तो पॉइंट ए पर कंज्यूमर इज मैक्सिमम लेवल पे सेटिस्फाइड, राइट, विद दिस कॉम्बिनेशन टू. लेट से पॉइंट बी पर जहां पर कंज्यूमर को 5 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट y मिल रहा है एंड 3 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट x मिल रहा है, उस पर कंज्यूमर को मैक्सिमम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन है. सो ये सारे जो कॉम्बिनेशंस हैं, ये सारे जो कॉम्बिनेशंस का जब आप एक पर्टिकुलरली आप एक ड्रॉ करते हो, सो यू गेट दिस काइंड ऑफ कर्व, राइट? एंड दिस पर्टिकुलर कर्व इज नोन एज इंडिफरेंस कर्व. What do we keep in mind in indifference curve? एक चीज आपको याद रखनी है. You need to keep in mind that the consumer should get maximum level of satisfaction at all points. At all points, maximum level of satisfaction. दोनों products का combination कुछ ऐसा बनाए कि maximum level of satisfaction मिले. And इस चीज का the graphical representation of these products का combination is what indifference curve is, right? So going by the definition, indifference curve is a graphical representation of the combined products, and if I have to say x and y, of the combined products that gives same kind or similar kind of satisfaction to the consumer, which actually makes them indifferent, hence the name indifference curve, right? Now again, agar same level of satisfaction hai, that means what? Consumer is getting similar utility or same kind of utility. So if I have to tell you about point A, right? If I have to ask you about point B, or if I have to ask you about point C, then we know that at all these points, point A, B, C, the consumer is getting the similar or same level of utility from these two products. So this is what? This is indifference curve. 2 points to remember: maximum level of satisfaction and similar level of utility. So these are the 2 points which we need to remember in indifference curve. So I hope you I've cleared this thing, what is indifference map and what is indifference curve, right? Now, second thing which you need to know is the indifference curve analysis, है ना? ये आपका एक क्वेश्चन है जो आपका एग्जाम्स में आपने शायद देखा होगा, किसी पीरियोडिक टेस्ट में आपने देखा होगा, किसी यूटी में आपने देखा होगा, that please they ask you explain indifference curve analysis, right? कुछ नहीं करना है आपको इसमें. अगर उन्होंने आपसे सिंपली पूछा है इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस जो है वो बता दो, जो मैंने आपको इंडिफरेंस कर्व के बारे में बताया, जो मैंने आपको इंडिफरेंस मैप के बारे में बताया, सिर्फ आपको वो बनाना है. आपको क्लियरली एक ग्राफ बनाना है. यू कैन टेक रेफरेंस फ्रॉम दिस. Prabjot, indifference curve is, I'll repeat it for you. Indifference curve is जहां पर आप एक graphical representation होता है, जहां पर दो चीजें आपको याद रखनी है प्रभजोत: maximum level of satisfaction which gives same kind of utility, right? So that is what indifference curve is all about. So एक ऐसा curve जिसमें आपके वो सारे permutation combination लगा के आपको वो combination मिलता है प्रभजोत जिसमें you get maximum level of satisfaction. Consumer को point A, B, C तीनों पर maximum level of satisfaction मिलेगा, तो that is what point A, B, C बनाते हैं the indifference curve, right? Now I was telling you about indifference curve analysis. Now indifference curve analysis के लिए best चीज है, अगर आपसे पेपर में आए, टेस्ट में, कहीं पर भी आए, this is one thing which I have told you multiple times. I think I have told you to you guys too, that always and always 2 things to follow. Number 1, you need to support your answers with flowcharts.
Make it a habit, support your answers with flowcharts, give your answers with flowcharts, because flowcharts are really eye catching, and if you have the understanding of concept, आप flowchart बहुत easily बना सकते हो. And number two, which I need to tell you specifically about the economics part, not the other subject, but specifically about economics and this and subjects which are like in applied in nature, right, which are more practical and applied वाले जो subjects है, उसके लिए दूसरी चीज जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ, always support your answer with examples. Examples के थ्रू आप जितना आंसर्स एक्सप्लेन करोगे, sticking to the word limit if there is any, always you think मतलब you'll get good marks, right? Flowcharts/graphs and दूसरी चीज examples. So indifference curve analysis, अगर मान लो किसी ने नहीं पढ़ा बट किसी बच्चों को पता है क्योंकि ये indifference curve है, पेपर में इतना बड़ा आ गया कि explain indifference curve analysis with the help of an example, या normal आ गया explain indifference curve. Now सर घूमने लगे कि भाई indifference curve analysis पूछ क्या लिया इन्होंने अचानक से. कुछ नहीं पूछा है, सिंपली आपको इंडिफरेंस कर्व जो है उसके बारे में बताना है. व्हाट इज इंडिफरेंस कर्व? एक एग्जांपल लेके, किसी भी चीज का एग्जांपल ले सकते हो, एप्पल ऑरेंजेस का ले सकते हो, बनाना पीचेस का ले सकते हो, किसी भी चीज का एग्जांपल ले सकते हो, एंड यू कैन इजीली एक्सप्लेन व्हाट इज दिस इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस इज, राइट? आपको सिर्फ ये बताना है कि जितने भी आपके कॉम्बिनेशंस हैं, जो भी आप कॉम्बिनेशंस बता रहे हो उस एग्जांपल में, राइट, वो सारे जो पॉइंट्स हैं, जो एक आप ग्राफ प्लॉट करोगे, वो कुछ ऐसा ग्राफ दिखना चाहिए. फॉर रेफरेंस आई हैव अटैच्ड दिस, एंड इसलिए आप क्या है, आप अपने 3 से 4 इंडिफरेंस कर्व जो है वो आप डिराइव कर सकते हो. सो व्हाट इज इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस? सिंपल ग्राफ पे लो, 2 आपको कमोडिटीज लेनी है, यू नीड टू टेक 2 कमोडिटीज और 2 goods, राइट, एंड बहुत सिंपल, जैसे हमारा ग्राफ नॉर्मल वाला बनता है, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस. एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस पे आपने एक एक कमोडिटी को असाइन कर दिया, राइट? सो अगर आपका ग्राफ एक कर्व है, एक लाइन है, इसका मतलब क्या है, दैट द कंज्यूमर हैज नो प्रेफरेंस फॉर एनी गुड, एंड उसको हर पॉइंट पर, फॉर एग्जाम्पल अगर ये है तो ऐसा नहीं है कि कंज्यूमर की प्रेफरेंस है कि उसको ज्यादा गुड वाई ही लेना है और लेस गुड एक्स लेना है. नो, देयर इज नो प्रेफरेंस फॉर कंज्यूमर. द ओनली थिंग इज, द सोल पॉइंट इज कि कंज्यूमर जो है उसको अपनी यूटिलिटी से मतलब है, उसको अपनी सेटिस्फैक्शन से मतलब है. फिर चाहे कंज्यूमर को यू गिव दिस मच क्वांटिटी ऑफ गुड वाई एंड वेरी लेस क्वांटिटी ऑफ गुड एक्स, और यू गिव द कंज्यूमर more quantity of good X and less quantity of good Y, right? Consumer has nothing to do with the preference for any goods. We only run between what? The consumer only runs between the level of satisfaction which he is deriving and the utility, right? The want satisfying power, right? और उसको क्या चाहिए? Maximum level of satisfaction चाहिए, और वो satisfaction same होना चाहिए throughout that curve in all those combinations at all those points, right? अगर उसको 4 यूनिट्स बनाना कंज्यूम करने से भी उतनी सेटिस्फैक्शन मिलती है जितनी सेटिस्फैक्शन उसको 2 ऑरेंजेस खाने से मिलती है, right? So that is 4 and 2 can be a combination for him because he is deriving maximum level of satisfaction or utility, right? So ये मैंने आपको concept explain करा, what is indifference curve analysis. Going by the definition, going by the words, because आप ऐसे नहीं लिख सकते, you need words, you have the idea, you have the concept, but you need words to translate that idea, that concept on paper. Okay, so उसके लिए आपको start करना है by writing indifference curve, and the indifference curve analysis, it works on a simple graph which have 2-dimensional, that is X and Y. I have already explained it to you over here, and each individual axis it indicates a single type of good, right? जैसे मैंने आपको bananas and oranges का example दिया था, ठीक है? अब एक चीज मैंने आपको बता दी है कि अगर एक स्ट्रेट लाइन है उसका मतलब क्या है कि कंज्यूमर का कोई प्रेफरेंस नहीं है, राइट? कंज्यूमर को ये नहीं चाहिए कि मुझे ज्यादा बनानास खाने हैं, मुझे ऑरेंजेस नहीं खाने. नो, इट इज नॉट लाइक दैट. देयर इज नो प्रेफरेंस फॉर कंज्यूमर. द ओनली रिक्वायर्ड थिंग, द ओनली प्री रिक्विजिट थिंग फॉर द कंज्यूमर इज कि मुझे मेरा सेटिस्फैक्शन मिलना चाहिए, मुझे सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिलना चाहिए, मेरा वांट सेटिस्फाइंग पावर, जो यूटिलिटी है मेरी, वो सेम होनी चाहिए थ्रू आउट, एंड आई एम ओके विद इट. सो दैट इज द इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस.
ये जो 3 इंडिफरेंस कर्व आपको दिख रहे हैं, IC1, IC2, IC3, आप कंज्यूमर को ऑन दीज कर्व्स, राइट, IC1, IC2, IC3, आप कंज्यूमर को कहीं पे भी बिठा दो, वहां पर उसको कोई भी कॉम्बिनेशन दे दो, उसको सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, यूटिलिटी मिल रही है, उसे कोई मतलब नहीं है कि ज्यादा गुड एक्स है या कम गुड वाई है, और वाइसा वर्सा. एंड दैट इज एक्चुअली व्हाट इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस इज, राइट. Now we have some properties of indifference curve. इसका एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनता है that what are the properties of indifference curve? Naruto says, "Ma'am, I'm very weak in economics." Naruto, are you a Pratham student? You can please answer me in the chat box, in the live chat. So properties का क्या है? बहुत एक important question बनता है that what are the properties of indifference curve? Now ये जो question है, Naruto, you are in which batch? Please do let me know your batch, and you can ping me on Telegram whatever you have doubts, whatever topics you're not able to understand, just ping me on Telegram. I can send you the relevant content and everything, right? So properties of indifference की curve अगर मैं बात करती हूँ, this is a very very important question. ये एक ऐसा question है कि most of the chances है कि आपको कुछ ऐसा या similar question you will definitely see in some form or the other, राइट. सो जो नंबर 1 प्रॉपर्टी है, एट टाइम्स क्या होता है ना, आपसे अगर उनको नॉर्मल 1 मार्क 2 मार्क क्वेश्चन है तो वो आपसे नॉर्मली पूछ लेते हैं स्टेट एनी 2 प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व, द नॉर्मल क्वेश्चन, राइट. लेकिन इफ दे वांट टू रेज द नंबर, रेज, अगर मार्किंग स्कीम उन्हें बढ़ानी है, राइट, what they can put that state any 3 properties or true properties of indifference curve with example or with explanation. वहां पर हमारा सर चकराता है कि भाई मैंने तो सिर्फ ये पढ़ा था कि इंडिफरेंस कर्व जो है वो कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन है, मुझे तो सिर्फ इतना पता था, भाई मैं कैसे एक्सप्लेन करूंगा. एंड फिर ये कौन कौन करता है कि अगर क्वेश्चन में पूछ लिया एक्सप्लेन द प्रॉपर्टी ऑफ इंडिफरेंस कर्व, आपने बड़े बड़े हैंडराइटिंग, आपने बड़े बड़े बोल्ड लेटर्स में लिख दिया प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व. नंबर 1, indifference curve is always convex to the origin. Number 2, indifference curves is sloping downwards from left to right. ये हमने लिख दिया. उसके बाद हम दोबारा से वो एक हेडलाइन लिखते हैं कि ऑलवेज कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन, और उसको दोबारा से रिपीट करते हैं, द इंडिफरेंस कर्व इज ऑलवेज कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन. और उस चीज को सिर्फ एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट को, एज स्टूडेंट, बिकॉज आई हैव सीन क्वाइट अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स, उस एक पर्टिकुलर स्टूडेंट को क्या, उस एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट को स्टूडेंट ट्राइज कि वो ऑल द परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगा के उसको हर तरीके से लिख दे, रिफ्रेस कर करके, राइट. हमें लगता है कि हमारा word limit match हो जाएगा, but you don't understand that the teacher is understanding all these things and the teacher wants to stick to the point, and वहीं पे हमारे marks जो है वो deduct हो जाते हैं, right. So whatever you are learning, just make sure to understand the reason behind that, कि उसके पीछे का reason है क्या. Because what if अगर आपसे उन्होंने पूछ लिया that what is the reason of this particular thing, or explain या justify this statement, okay. So जो 5 प्रॉपर्टीज है इंडिफरेंस कर्व की, बेसिकली उसमें से 3 प्रॉपर्टीज से ज्यादातर मैक्सिमम टाइम्स आपका उन 3 प्रॉपर्टीज से क्वेश्चन आता है, एज इन उन प्रॉपर्टीज को जस्टिफाई करना है या रीजन देना है, राइट, या ऐसा लिखा हुआ आता है थ्रो सम लाइट ऑन दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट. Now, before going on to that, let me tell you that what are the properties of indifference curve, right? So the number 1 property we have is that indifference curve always slopes downward from left to right. As I have told you, I have drawn the diagram, as you have seen the diagram in the previous slide, that indifference curve is always sloping downwards from left to right, right? ये पहला प्रॉपर्टी है इंडिफरेंस कर्व का. सेकेंड प्रॉपर्टी इज हायर द इंडिफरेंस कर्व, हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन. जितना ऊपर इंडिफरेंस कर्व होगा उतना ही लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन ज्यादा होगा. फॉर एग्जाम्पल, एक आपका ये इंडिफरेंस कर्व है जिसको आई एम रिप्रेजेंटिंग बाय IC1. दूसरा इंडिफरेंस कर्व मैं इसके ऊपर बना रही हूँ which I am representing by IC2, and the third indifference curve is I am making above that which I am representing by IC3. ये तीनों इंडिफरेंस कर्व है, राइट. एक चीज इस प्रॉपर्टी के साथ ही एक और प्रॉपर्टी में बता रही हूँ दैट इंडिफरेंस कर्व दे नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर. बिकॉज अगर इंडिफरेंस कर्व ने इंटरसेक्ट कर दिया एक दूसरे को, क्रॉस कर दिया, तब उस केस में इंडिफरेंस कर्व तो है नहीं वो, बिकॉज सेम लेवल ऑफ कॉम्बिनेशन विल राइट बोथ थिंग्स, right. So we indifference curve, they never intersect each other. That is one property.
Okay, but if I have to tell you कि indifference curve shows higher level of satisfaction, बहुत simple सा logic बता रही हूँ. If I take IC1 ने मुझे let's say 7 units of Y मिल रहा है and मुझे 1 unit of X मिल रहा है, right? IC2 में same point पर मुझे 7 units of Y मिल रहा है, right? And हमें मिल रहा है 3 units of X. IC3 पर मुझे सेम यूनिट 7 ऑफ y मिल रहा है, लेकिन मुझे ज्यादा वाला मिल रहा है, लेट्स से 7 ऑफ x, राइट? तो क्या है, डू यू थिंक कि ये हमारा जो हायर आईसी है वो हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन दे रहा है, बिकॉज दैट इज द कॉम्बिनेशन, right? So that is one thing, that higher the IC, higher level of satisfaction. Mayank, it is all about understanding the concept. आप I think आप ज्यादा फोकस करते होगे ऑन रेक्टिफिकेशन पार्ट, और अगर हम ज्यादा रेक्टिफिकेशन पार्ट पे फोकस करते हैं ना मयंक, तो उससे क्या होता है कि हमें चीजें समझ नहीं आती, एंड लास्ट मोमेंट पे जो हमारा एग्जाम टाइम होता है तो हमें क्या लगता है कि ओके, हम ना बिल्कुल एकदम क्लूलेस हो जाते हैं कि क्या करना है, राइट? रेक्टिफिकेशन नहीं करना, ऑलवेज use examples, always use flowcharts, always try to understand the concept behind whatever you're reading. The subject will in itself will become interesting, right? Now next जो property है वो क्या है, that indifference curve is always convex to the origin. Now क्या कभी आपने लाइफ में मयंक indifference curve आपने ऐसा देखा है? Is it like concave to the origin? नहीं, हमने 9th में 10th में I would say हमने concept पढ़ा था concave एंड कॉन्वेक्स का. जब हम लाइट, लेंस, ये सारी चीजें पढ़ रहे थे, कॉन्केव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, ये तो सबने पढ़ा था भाई, 9th 10th तो हम सब कर कर आए हैं, है ना? कॉन्केव और कॉन्वेक्स. आज भी स्टूडेंट्स से कम अप टू मी एंड दे आस्क कि मैम हम कॉन्केव और कॉन्वेक्स जो है वो हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, राइट? हम कंफ्यूज हो जाते हैं बिटवीन द शेप्स, है ना? तो सिंपल सा एक ट्रिक बता रही हूँ, जो ऐसे केव बना रहा है, राइट, दिस इज अ काइंड ऑफ cave which is being formed. तो जो ऐसा वाला शेप होगा that is concave to the origin, और जो ऐसा वाला केव होगा, राइट, ऐसा वाला जो केव होगा which is you can say कि जब हम x बनाते हैं, राइट, whenever we make x तो हम ऐसे बनाते हैं ना, so जो ऐसा वाला केव होगा that is convex to the origin. सिंपल सी चीजें. I think एक और आपको एडिशनल चीज मिल गई if you get confused between concave and convex. So indifference curve is always convex to the origin. And the fourth pointer is fifth जो आपका I would say property है, that is indifference curve, it never touches the axis. Had this indifference curve, ये है, अगर मान लो indifference curve ने axis छू लिया, तो क्या ये indifference curve है? Because यहाँ पर और यहाँ पर तो कुछ ज्यादा ऐसा combination दिख नहीं रहा, right? So it never touches the axis. So these are the properties of indifference curve, right? Majorly in properties में से 3 properties जो हमारी starting की 3 properties हैं, इसका हमें reason वो लोग पूछते हैं, that explain the reason, throw some light, ये सारी चीजें पूछते हैं. So I'll take one slide each for the reasons, very simple, very easy reasons. उसकी वजह से आपको property भी याद हो जाएगी, right? So the first property is that it slopes downwards from left to right. हमने पढ़ा है ऐसे slope downward करता है from left to right, and obviously जब slope downward कर रहा है तो क्या है, it has a negative slope. ये तो सिंपल सी चीज है, it slopes downward from left to right, that means it has a negative slope. सिंपल सा बात अगर सोचो कि अगर आपके पास इनकम आपकी फिक्स है, राइट, एंड अगर आपको ऑप्शन दिया जा रहा है बिटवीन बनानास एंड पीचेस, राइट, या बनानास एंड ऑरेंजेस, ओके, सो उसमें आपको क्या करना है कि अगर आपको, मेरा आज मन कर रहा है कि मुझे ज्यादा ऑरेंजेस खाने हैं, राइट, आई वांट टू हैव मोर ऑरेंजेस बिकॉज ऑरेंजेस आर वेरी गुड इन विटामिन सी, एंड विटामिन सी का जो है बहुत ज्यादा मार्केट में इट्स लाइक फ्लैट अप, ओके, सो आई वुड से कि भाई मैं अपने बनानास का जो कंजम्पशन है, आई एम रेडी टू decrease that consumption of bananas because I want to increase my consumption of oranges. Why? Because I have a fixed income. मेरा इनकम तो फिक्स है ना, जो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, बट आई वांट यूटिलिटी. मेरा वांट सेटिस्फाई क्या करेगा, मेरा वांट सेटिस्फाई करेगा ऑरेंजेस, राइट? So for that I will reduce or my utility or मेरा जो मन है वो bananas will reduce, will fall, so that मेरा जो total satisfaction है वो same रहे, right, given the income. So इसीलिए जी जो fall होता है from left to right, because simple है, अगर आपको एक commodity को
ज्यादा कंजम्पशन करनी है तो आपको दूसरे का कंजम्पशन कम करना पड़ेगा, बिकॉज वी हैव फिक्स्ड इनकम, वी हैव फिक्स्ड रिसोर्सेज, राइट? सो दैट इज द रीजन बिहाइंड दैट कि नेगेटिव स्लोप क्यों है, व्हाई इज इट स्लोपिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट? बिकॉज अगर एक कंज्यूमर ने डिसाइड किया टू हैव वन मोर एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ एनी कमोडिटी, उसके लिए he has to or she has to sacrifice the one more unit or some quantity of some other commodity, right? So if a consumer decides to have one more unit of commodity, let's say bananas, of another goods जो है पीचेस का, उसका जरूर उसका फॉल होगा। क्यों? क्योंकि मेरा जो सेटिस्फैक्शन है दैट शुड रिमेन द सेम, एंड दैट्स द रीजन व्हाई जब हम ये प्लॉटिंग करते हैं, जब एक बढ़ता है दूसरा घटता है, तभी तो आपका नेगेटिव स्लोप आएगा, तभी तो आपका नेगेटिव स्लोप आएगा, डाउनवर्ड्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट आएगा, राइट? सो दैट इज व्हाट, दैट इज वन प्रॉपर्टी एंड दैट्स द रीजन बिहाइंड दैट. सो इफ इन एग्जाम दे आस्क यू दैट एक्सप्लेन द प्रॉपर्टी indifference curve has a negative slope, right? You can clearly explain this by giving this reason, right? And I'm sure you'll get full marks. Now moving further to the second property, that higher the IC, right, indifference curve जो है, higher indifference curve represent larger bundle of goods. ये चीज मैं आपको भी थोड़ी देर पहले बता चुकी हूँ that ये कौन सी property है? This is the property that higher IC gives higher level of satisfaction. Now this is second property, higher the IC gives higher level of satisfaction. एक एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ. These are three ICs, I would say IC1, IC2, IC3, right? Of course अगर मेरा ये IC है, मैं इस पॉइंट को लेके चल रही हूँ, right? In IC1 मेरा जो बंडल ऑफ गुड्स है वो कम है, तो मतलब सेटिस्फैक्शन कम होगा, right? दूसरे IC पे बंडल ऑफ गुड्स मेरा ज्यादा हो जा रहा है, तो सेटिस्फैक्शन ज्यादा होगा. क्यों ज्यादा हो रहा है? कि हमारा गुड Y तो हमारा सेम है लेकिन गुड X हमारा बड़ा, राइट? अगर मैं तीसरा IC पे चल रही हूँ, गुड Y हमारा सेम है लेकिन हमारा गुड X जो है वो बड़ा है. और आप इसको ऐसे भी बड़ा कर सकते हैं ना, अपवर्ड वाले वे में. सो व्हाट डज इट मीन कि जितना ज्यादा आपको बंडल मिलता रहेगा, जितना बड़ा आपको कॉम्बिनेशन बनता रहेगा, उतनी ज्यादा आपको सेटिस्फैक्शन होती रहेगी, राइट? सो ये आपका इस चीज के लिए लेकर चला है, जो इसमें अजम्पशन जो हमने ली है वो क्या ली है? अजम्पशन इज दैट कंज्यूमर के जो प्रेफरेंसेस हैं आर मोनोटोनिक. इसका मतलब क्या है कि वो हमेशा लार्जर बंडल प्रेफर करेगा टू गिव हिम हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन. सो दिस इज वन सच I would say assumption जो लेके चली गई है, right? So prefer larger bundle or higher level. So higher IC gives higher level of satisfaction. Okay. Now the third property is IC is convex to the origin. That is MRS. That is marginal rate of substitution. MRS क्या है? MRS is marginal rate of substitution. Okay. Of X and Y. X and Y क्या है? These are the two goods X and Y. IC convex to the origin क्यों है? Because जो marginal rate of substitution है, मतलब कितना आप sacrifice कर रहे हो, right? कितनी आपकी marginal utility जो है वो कम ज्यादा हो रही है, right? उस पे depend करता है, and इसीलिए IC जो है it is convex to the origin. Okay, convex to the origin मतलब क्या? ये shape, ठीक है? Because the marginal rate of substitution is always diminishing. ठीक. लास्ट लेक्चर में वी हैव स्टडीड अबाउट द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, राइट? व्हाट इज दिस लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी? कि कंज्यूमर अगर एक कमोडिटी को कंज्यूम करना चाह रहा है, प्रोवाइडेड ऑल दी assumptions जो हमने लास्ट सेशन में पढ़े थे, फॉर दैट द कंज्यूमर नीड्स टू एक्चुअली सैक्रिफाइस अनदर. फॉर एग्जाम्पल अगर X और Y आपके दो कमोडिटीज हैं और कंज्यूमर को Y से यूटिलिटी ज्यादा मिल रही है, Y का ज्यादा कंजम्पशन है, सो ही हैज टू सब्स्टिट्यूट, ही हैज टू sacrifice some units of X, right? So these are the two goods. So that is what for every additional unit of other good, मतलब जितना भी उसको Y का एक एक एक्स्ट्रा यूनिट देना पड़ेगा, एक एक एक्स्ट्रा यूनिट वो कंज्यूम करेगा, उतने पर ही उसको हर एक एडिशनल यूनिट पर उसे X जो है वो सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा. So that is what, yes Aditya, the more we consume the less satisfaction we get, right? ये भी एक जो आपका लॉ है, ये I have covered this in the previous session, आप जाके देखो, right? We have covered it under the part utility वाला आपका एक सेशन है.
ठीक है. सो ये क्या है, मैंने वहां पे तीनों लॉज आपको समझाए हैं. डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, राइट, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, ऑल द थ्री लॉज आई एक्सप्लेन. सो दैट इज द रीजन व्हाई हमारा आईसी क्या है, इट इज कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन, right? So with this we have covered all the important pointers related to IC, indifference curve, and all the possible questions which you can get from the indifference curve and indifference curve analysis, right? So as always, thank you so much guys. Stay tuned, keep smiling, keep revising, subscribe to Pratham Test Prep's channel if you haven't done already. Give this video a thumbs up, right? And next week we'll come with another topic, a very informative video which will be very, very helpful for your schools too, for economics. And thank you so much. Bye bye, take care, good night.